Hello, everyone. Welcome to another episode of Policy Beats. Today, we are joined with Mohammad Tabish Iqbal Awan, and he holds a master's degree in Mineral and Energy Economics from the Colorado School of Mines and a master's degree in Petroleum Economics from IFP School in France. His expertise in financial management and his passion for energy economics have earned him a well deserved reputation as a forward thinking leader in the field. Thank you so much, sir, for taking out the time for this podcast. We have quite a few questions for you because energy का जो subject है वो पाकिस्तान में तो खैर उसकी बहुत ज़्यादा hype है. It's become almost a drawing room conversation for everyone to talk about. It's affecting so many people in different ways. But before we learn about कि चल क्या रहा है सारी चीज़ों के पीछे, what are the technicalities, I would first like to know कि आप इस subject में how did you find yourself studying this or being where you are today? First of all, thank you very much, Javeria, for inviting me on this platform and giving me a chance to talk to you guys and talk to the people who are watching us right now on this very important subject. And I believe that this वो subject है which has interest for everyone, and because everyone is getting affected from it nowadays. As far as my journey of studies is concerned, as like everyone, I got my interest from my father. He was into the economic policy and stuff. Achha. So that's where I got the economics part. And then, of course, this energy is a hot issue everywhere in the world. And, a lot of changes and a lot of things happened over the time just because of the race among different countries in reaching towards the efficient utilization of energy sources. So that's how I got an interest, and I thought that this would be the right degree. And you hardly find very specific degrees. It is one of those very specific degrees Exactly. that I came across, and Colorado School itself is a big school, so I got an admission, and that's where the journey started. Well, that's great because now we get to ask you some interesting questions. And I hope that myself, along with our audience, gets to learn a lot. तो सबसे पहले तो obviously we would want to understand कि जो सारा सिलसिला है energy politics एक तरफ है और फिर आपने effective energy utilization की भी बात की. उस सब में तो खैर शायद वो broader subjects हैं, लेकिन मेरे पास कुछ थोड़े से targeted questions हैं जो I feel like लोग आपस में भी पूछ रहे होते हैं, जिसमें से I will ask you few थोड़ा सा mix करके भी कि what are the effects of energy prices on economic growth? Economic growth, as you know, given Pakistan's context, एक बहुत बड़ा रोज़ की एक debate है. कभी हम IMF के पास जा रहे होते हैं, कभी हमें वर्ल्ड बैंक इश्यूज़ हो रहे होते हैं, कभी पे हम लोन्स मांग रहे होते हैं, कहीं पे CPEC की बात आ जाती है. बहुत सारी इस तरह की डायमेंशंस हैं हमारी इकॉनमी की जो कि every day it's like the entire country is just focused on the idea that we're constantly sinking. What sort of effect do the energy prices have then when it comes to our economic growth? Whenever you talk about the energy prices, first of all, I'll start off with energy. What is energy? Actually, energy is just like you have food in the morning and then you live on it for the rest of the day. So energy is just like it's a backbone of every economy. Sahi. You कुछ भी करने के लिए, for any sector to develop, for any sector to be brought into light, energy is the input that is required to be brought into place in order to run that sector and for economic growth as well. As far as the energy prices are concerned, जब energy prices increase होंगी, उससे सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि आपकी इकोनॉमी कौन सी है. आर यू एन इम्पोर्टिंग इकोनॉमी और आर यू एन एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी? इफ़ आई टॉक अबाउट पाकिस्तान, most of the developing countries, I won't say most, but yeah, there's a big part of developing countries which import energy and fossil fuels in order to run their economics. If I talk about Pakistan, यहाँ पे क्या होता है कि जी आपकी एक import cost है that is attached with the fossil fuels जो आपने बाहर से import करने हैं, and जिसकी basis पे आपकी economy ने चलना है. Fossil fuels 58% आपकी economy का जो है, it covers the 58% energy mix of your economy. That means कि अगर 58% economy चलती ही fossil fuels की basis पे. Fossil fuels 3 कौन से हैं उसके अंदर? आपका coal है, oil है, and then gas. Right. All these 3 things, even if you are self-sufficient,
If you are self-sufficient, good enough. You are an exporting country, you are in the right hands, you are in the right direction. But सही. if you are importing all these things, तो आपकी एक import cost होगी. और जब वो import cost गवर्नमेंट को बेयर करनी है, आइदर वो गवर्नमेंट खुद बेयर करेगी या आइदर वो पास ऑन करेगी अपने पब्लिक पे. जब गवर्नमेंट एक कॉस्ट बियर करती है और उसको पास ऑन नहीं करती, तो उसकी वजह से बहुत सी डिस्टॉर्शंस क्रिएट होती हैं. इसको कहते हैं इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस. सही. और ये लॉन्ग टर्म नहीं होती, ये सस्टेनेबल नहीं होती. फॉर एग्जांपल, ओवर द टाइम गवर्नमेंट्स जो हैं सब्सिडीज़ दे रही होती हैं. बिगेस्ट कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करूँगा, और शायद लोग मेरे से इस पे बड़े खफा भी हों, लेकिन सब्सिडी एक तरफ लोगों की हेल्प सपोर्ट होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये इकोनॉमिक्स कंट्री की इकोनॉमिक्स को डिस्टॉर्ट कर देती है. क्यों? अच्छा. ये सस्टेनेबल नहीं है. तो आपने सिर्फ अफोर्डेबिलिटी बाय इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होती. देयर इज अफोर्डेबिलिटी, देयर इज एक्सेसिबिलिटी एंड देयर इज सस्टेनेबिलिटी. सही. तो whatever you are into, if it's not long term, if you cannot sustain that cost, then that means someday, if not today, the next day you will have to pass it on to the people. So energy prices जहाँ पे भी इंक्रीज़ होंगी, उससे क्या होगा, आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो लोगों की बाइंग पावर जो है वो अफेक्ट होगी. आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी. दूसरी तरफ जितने भी टैक्सेस गवर्नमेंट जो अप्लाई करती है, सही. इंटरेस्टिंग बात है, टैक्सेस अप्लाई करती है, एनर्जी प्राइस ऊपर जाती है, टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंटल रेवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं. लेकिन ये सारा का सारा बर्डन बेयर कौन करेगा? ये पब्लिक बेयर करेगी. फिर अगर आप इन एनर्जी प्राइसेस को, अगर एनर्जी प्राइस इंक्रीज़ करती है वर्ल्ड ओवर और आप एक इम्पोर्टिंग कंट्री हैं और आप उस एनर्जी प्राइस को पास ऑन नहीं करते, ठीक है, सही. उससे एक जो बड़ा नुकसान होता है वो ये होता है कि द रियल वैल्यू ऑफ दैट सोर्स ऑफ एनर्जी वो रियलाइज़ नहीं होती पब्लिक को. Tell me, this has basically what has happened in Pakistan, essentially, considering the gradual rise. मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा इस पे. काफ़ी we were self-sufficient in gas. Okay. Like if you go maybe a decade, आप एक decade पीछे चले जाएं तो आप self-sufficient थे गैस पे. Right now आप तकरीबन 25% of your gas is being imported. अब either you import that gas Okay. on high prices, on the spot prices, on contracted prices through LNG imports, या either you shift towards the cost effective technologies जहाँ पे आप अपनी price को cut कर सकें. That's renewables. और I believe कि if I talk about few European countries like Norway, like Sweden हो गया, like Iceland, तो ये वो countries हैं जिनका 50 to 70% इनकी reliant है renewables के ऊपर. सही. And इस वक्त the whole world is running after this shift. Because इसके negative impacts भी हैं, इसके climatic impacts भी हैं, इसके cost wise impact भी हैं. तो if you want to sustain for a longer time, you will have to take care of these things. You have to keep in mind everything which is being affected because of these prices, because you cannot last for long. So then आपने थोड़ा सा ग्लोबल डिबेट के साथ भी लिंक किया है, लेकिन उन क्वेश्चंस पे मैं थोड़ा बाद में आऊँगी. थोड़ा सा मुझे फिर ये बताइएगा, जब ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं तो देन हाउ डू वी क्रिएट अफोर्डेबल एनर्जी, अफोर्डेबल एक्सेस टू एनर्जी, और उसके साथ साथ with your experience, what do you identify as the critical problems within Pakistan's energy sector जिनको टारगेट कर रहे हैं या करना चाहिए या क्यों नहीं कर पा रहे? वेल, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत हैं, लेकिन अब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं जिस पे मैं गवर्नमेंट को दाद देता हूँ. जैसे रिसेंटली इन्होंने मिनरल समिट करवाया, एंड द एम वाज कि आप सारे जो है ना इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को आप एजुकेट करें रिगार्डिंग योर मिनरल इंडस्ट्री एंड ब्रिंग देम इन टू पुट इन देयर मनी. अब देखें, जितनी भी इन्वेस्टमेंट आपने बाहर से लेकर आनी है, फॉर दैट आप इन्वेस्टर क्या देखता है कि मेरा मनी सेफ है जहाँ पे मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ. सही. क्या उसकी क्या इज इट या प्लान्स आर अनसर्टन है. तो 2 or 3 थिंग्स जिनका आपको ख्याल रखना पड़ेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सोशल स्टेबिलिटी हो गई, आपकी रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का आपको यू नीड टू टेक केयर ऑफ इट, तो ताकि इन्वेस्टर थोड़ा ईज फील करे वाइल एंटरिंग. सेकेंडली, आपको इन्वेस्टर्स को जो है यू नीड टू ईज ऑफ एंट्री उसको चाहिए.
ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि एक बैरियर टू एंट्री और एक इन्वेस्टर की अनसर्टेनिटी जो कि इन्वेस्टर को स्टॉप करती है किसी भी कंट्री में जाने से। तो डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर जब कोई इन्वेस्टर बाहर से आ रहा है तो उसके लिए आपने ईज़ क्रिएट करनी है। ईज़ आप कैसे क्रिएट करेंगे? आप वन विंडो ऑपरेशन करें, आप पॉलिसी ऐसी इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाएं ताकि आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो उनको, ताकि वो क्लीन एनर्जी के अंदर इन्वेस्ट करें, ताकि वो जितने भी आपके अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करें। फिर आपने अपनी रिलायंस जो है लोकल सोर्सेज के ऊपर रखनी है। अब लोकल सोर्सेज में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पाकिस्तान की जो एनर्जी मिक्स है ना उसका 58% तो ऑयल, कोल और गैस है। सही। अब ये वो चीज़ें हैं जो हमने मोर और लेस, मैं आपको ऑयल का बताऊं तो इट्स 85% तकरीबन बाहर से आ रहा है, गैस इज़ 25% बाहर से आ रही है, कोल का भी एक बड़ा चंक बाहर से आ रहा है, बट लेकिन थर कोल और इस तरह से कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स और लग रहे हैं जिसकी वजह से मैं आई वुड लाइक के गवर्नमेंट इन फ्यूचर कर रही है इसके ऊपर, लेकिन ये है कि उससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। आप यू विल बी मोर रिलायंट अपॉन योर ओन रिसोर्सेज। तो ये तीन तो वो चीज़ें होंगी जिस पे there is no way rather than relying, you cannot make oil or you cannot make gas on your own. You can't create it yourself. Yeah, it's something that which takes years and more than years and years, million years go. So I would not go in that detail. लेकिन जब बात करता हूँ कि मेरे पास अवेलेबल क्या है, मेरे पास बाकी कुछ ऐसी सोर्सेज हैं, मेरे पास हाइडल अवेलेबल है। Exactly. ठीक है, मेरे पास सोलर और विंड फार्म्स, ये रिन्यूएबल की तरफ जा रहा हूँ, सोलर और विंड फार्म्स अवेलेबल है। हाइडल की कैपेसिटी, हाइडल में इन्वेस्टमेंट्स जो बिगर इन्वेस्टमेंट्स है वो आपका दासू, बादशाह और मेमन डैम जो हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है रिगार्डिंग हाइडल। लेकिन अगर मैं विंड फार्म की तरफ, विंड एनर्जी और सोलर की तरफ देखूं तो पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। देयर इज़ अ वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी है जो कहती है 40 गीगावाट की पोटेंशियल आपकी सोलर की है, एंड देयर इज़ अनदर स्टडी विच सेज 350 मेगावाट की 350,000 मेगावाट की जो है आपका पोटेंशियल विंड का। इसकी मैनिफेस्टेशन में इज देयर अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम या विल का इशू है? व्हाट इज़ इट दैट्स स्टॉपिंग अस फ्रॉम, बिकॉज देखिए बहुत से कंट्रीज़ में जैसे कोल माफियाज या इस तरह की कॉन्सेप्ट्स भी पाए जाते हैं, तो कोई ऐसी सिचुएशन है यहाँ पे जो हमें रोक रही है फ्रॉम एक्चुअलाइजिंग द रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज दैट वी हैव? You know, by itself government is not enough to take care of everything. You know, like you have to educate the whole system, you have to educate the whole educate masses on the energy conservation, on shifts to new things which will be beneficial for them, for their health, for their pocket, and also beneficial to the country as well. So it's like summed up, you need to move it in a summed up way. So it's not a one body effort that's enough to bring about this change. और मैं बल्कि आपको इंटरेस्टिंगली कुछ यहाँ पे नंबर्स थ्रो करूँगा। नंबर्स ये कि जब आप कंपेयर करते हैं किसी भी जो 4 से 5 सोर्सेज हैं आपकी, इनको आपने जब कंपेयर करना है ओवरऑल कि यार मेरी जो है मुझे कॉस्ट वाइज इफेक्टिव और एफिशिएंट कौन कौन सी हैं, तो आप एक देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट, एक मीट्रिक है जिसको कहते हैं लेवलाइज्ड कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जिसको हम LCOE कहते हैं, और दैट्स द लीस्ट फॉर विंड पावर एंड दैट्स द हाईएस्ट फॉर न्यूक्लियर। विंड पावर और ऑयल और गैस का भी इन बिटवीन है। तो आप देखें कि विंड पावर का जो लीस्ट LCOE, उसके अंदर LCOE के अंदर जो है ना सारा का सारा एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन इट। उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी उसके अंदर है, फिर उसकी ऑपरेशन कॉस्ट भी अंदर है। फिर विंड का जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि इसकी एमिशंस टुवर्ड द एनवायरनमेंट दे आर द लीस्ट। 12 ग्राम्स ऑफ CO2 आई थिंक जो है ये एमिट करता है पर किलोवाट के अंदर की जनरेशन के अंदर। ऑन द अदर हैंड आप कोल की अगर एमिशंस देखें तो वो 800 और 700 ग्राम्स हैं ऑफ CO2 इन द एनवायरनमेंट for 1 kilowatt hour for 1 kilowatt generation. So it cannot be, I cannot take into account one thing and leave the other. I have to take everything side by side. Again, I would quote the same 3 things: the affordability, the sustainability, and then the accessibility. सही. So ये 3 rules तो आपको follow either way करने। सही. And एक interesting बात यहाँ पे वो ये कि हमारे यहाँ किसी किस्म की
जितनी भी एनर्जी सोर्सेज हैं या जितने भी आई वुड से इन्वेस्टर्स और द जो बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जो यूटिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं पब्लिक को, डीरेगुलेशन नहीं है उसके अंदर, रेगुलेटेड बॉडीज़ हैं. अब जब डीरेगुलेशन नहीं होती है, रेगुलेटेड होता है, तो वो एक किस्म का, it's not automatic by itself. You actually direct it. When you direct things, फिर एक इकोनॉमिक्स की डिस्टॉर्शन क्रिएट होती है. तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, अगर आप वेस्ट में भी देखें, डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के अंदर डीरेगुलेशन इज़ अ फिनोमेना विच इज़ फॉलोड. तो यहाँ पे डीरेगुलेशन कैन ब्रिंग अबाउट अ बिग चेंज. डीरेगुलेशन से एक परफेक्ट कंपटीशन की इन्वायरमेंट आती है, एक ट्रांसपेरेंसी की इन्वायरमेंट क्रिएट होती है, फिर उसके बाद एक ऑफ कोर्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी इन्वायरमेंट क्रिएट होगी. तो these are few steps which can be taken over time, but again they are long term. ऑफ कोर्स किसी भी पॉलिसी का रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म में ही नज़र आएगा. वो शॉर्ट टर्म गोल्स इवेंचुअली एडहॉकिज्म नेवर रियली पेज ऑफ वेल, एंड दैट हैज़ प्रिसाइसली व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग एज वेल विद रिगार्ड्स टू आवर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एनी रिफॉर्म्स. आपने अभी डीरेगुलेशन की बात की है. एक मिसाल के तौर पे अभी टेक्नोलॉजी का एक बहुत हाइप चल रहा है, टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट चल रही है, हम तो एआई के ऊपर भी रेगुलेटरी बॉडीज़ बिठाना चाह रहे हैं. तो जब आपका स्ट्रक्चर ऐसा हो जहाँ पे हर चीज़ की you feel the need to tighten, the bolts, rather than you let it be a part of the society and see how it develops. तो आपने बहुत अच्छा point raise किया है कि perhaps let the idea of social responsibility, develop within the society. Let people work their way towards it as well. So that's a very interesting point that you've raised, and I hope कि ये as a, that it's raised also on the tables where it can actually work as well. And so आपने, as you mentioned, कि since Pakistan is, dependent on importing most of its energy needs, and obviously जब global markets में वो shocks आते हैं, तो naturally we get hit by that as well. लेकिन at the same time global debate पे जब हम जाते हैं, तो वहाँ पे decarbonization की बात हो रही है. There are policies, there are initiatives for climate finance or carbon credits, etc., etc. A lot of things that perhaps for Pakistan right now are very difficult. तो उस सारे सिलसिले में हाउ डू यू देन, इज़ इट पॉसिबल इन फैक्ट टू रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन, कीपिंग इन माइंड हमारी जो सोर्स है वो फॉसिल फ्यूल्स हैं, और एट अ टाइम जब हमें इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है? देखिए, देयर इज़ नथिंग नोन एज रिड्यूसिंग एनर्जी कंजम्पशन. सही. एनर्जी कंजम्पशन मीन्स मेरा फूड इनटेक कम होगा तो मेरा आउटपुट भी कम होगा. सही. तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आई टेक बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. द पॉइंट इज एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस नहीं करनी. वी हैव टू रिड्यूस आवर रिलायंस ऑन द fossil fuels. We need to shift towards the renewables. Renewables में wind power, wind, solar, and other renewables like nuclear. इनमें आप you can shift towards these. You can put up more investment. जितना भी आप बड़ा इस 58% of the fossil fuels में जितना बड़ा chunk आप वहाँ से reduce करेंगे, either way you have to fill it up with some other renewables. If you talk about hydel, तो it's a big potential for Pakistan. How, like if you talk about अगर आप सिर्फ KP की बात करें, 3500 पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जहाँ पे आप यू कैन बिल्ड अप डैम्स. उससे क्या होगा, वहाँ पे आप डैम बनेगा, लोकल ट्रांसमिशन होगी, ट्रांसमिशन ईजी होगी, लॉसेस कम होंगे. तो ये देखें, ये वो चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं और दे कैन ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज. ऑफ कोर्स व्हेन यू विल शिफ्ट टूवर्ड्स रिन्यूएबल्स, तो you will become a part of that those countries or that group which is into decarbonization. अब over the time अगर आप देखें जो बड़े agreements हुए, like मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था, उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल था. मॉन्ट्रियल जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs जो हैं उन, क्योंकि दे डिप्लीट द ओजोन लेयर, उसको रिड्यूस करने के लिए उन्होंने जो है ऑल द कंट्रीज सैट टुगेदर टू फिक्स दैट इशू. फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल आया, फिर अब सुपरसीड किया इसने पेरिस एग्रीमेंट. तो इनका एम है बाय 2050 जो है दे हैव टू लिमिट द टेम्परेचर टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, और 2030 तक जो है 45% जो है वो दे वांट कि जी इसको रिन्यूएबल्स के ऊपर हम रिलायंट हो. तो ऑफ कोर्स जब आप जैसे ही रिन्यूएबल्स के ऊपर जाएंगे,
तो देर विल बी अप फ्रंट कॉस्ट, बट ओवरऑल इफ़ यू टॉक अबाउट द लाइफ स्पैन, जिसके अंदर मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट का जिक्र किया, LCOE, जो इनकॉर्पोरेट करता है सारी की सारी कॉस्ट को, तो ये विंड और ये सोलर और ये हाइडल के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, दे कैन बी अ गुड कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स द एनर्जी कंजम्पशन, और technological innovation itself contributes towards the economic growth. Exactly. So the more you shift towards the cleaner, the more लोगों की जो है लाइफस्टाइल इम्प्रूव करेगा. तो ये दिस एवरीथिंग इज लेकिन एक स्मॉल ये चंक्स. पॉइंट अक्सर उठाया जाता है कि इवन फॉर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन टू टेक प्लेस, अब इंडस्ट्रियलाइज होने में, मतलब यूरोपियन सोसाइटीज़ वेंट थ्रू दैट, दे एन्जॉयड दैट पीक ऑफ जितना उन्होंने कार्बन और वो सब कुछ करना था कर लिया. अब जब हमारी बारी आई है तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं इस मामले में. तो वो एक एनर्जी पॉलिटिक्स की भी डायमेंशन आ जाती है. एनी कमेंट्स अबाउट दैट? वेल, जब आप बात करते हैं ना डेवलपिंग इकोनॉमी की, तो नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि जी इकोनॉमिक्स क्या कहती है? इकोनॉमिक्स कहती है कि एक सप्लाई है, एक डिमांड है, ठीक है. और किसी भी चीज़ की सप्लाई अगर ज़्यादा हो जाए तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी, किसी भी चीज़ की सप्लाई कम हो जाएगी तो उसकी प्राइस ज़्यादा हो जाएगी. तो दिस इज़ हाउ इकोनॉमिक्स वर्क इन द डेवलप्ड वर्ल्ड. व्हेन यू टॉक अबाउट डेवलपिंग इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमिक्स डजंट वर्क लाइक दैट. इकोनॉमिक्स की जो रूल्स हैं उस तरह से अप्लाई नहीं होते जिस तरह से वहाँ पे अप्लाई होते हैं. यहाँ पे आपको एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि जी जहाँ पे मैं आपको अभी कह रहा था कि डी रेगुलेशन होनी चाहिए, सही, वहाँ पे डेवलपिंग इकोनॉमी की नीड है गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू सरपास द लूप होल्स ऑफ द सिस्टम. तो वो कुछ चीज़ें हैं वो एक इकोनॉमी की नीड होती हैं. तो उसके बगैर जो है लाइक एज इकोनॉमिक्स इज़ नॉट एज द सेम फॉर द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी. सो व्हाट वर्क्स फॉर देम, it's not necessarily important कि वो पाकिस्तान के लिए भी it will work like that. my last question could possibly put you in a tight spot, but of course, and I will be concluding our session with it, and that's essentially, we saw the price hike situation with the petrol, with the electricity. How long will this be continuing? This is just focused for the audience, just to know what is the rationale behind this particular decision, and are we going to see continued such decisions? As far as price hikes are concerned, of course, international market, when till the time you are dependent upon the international market, you'll have to face these price hikes. You will Right. have to pay it from your pocket rather from the pocket of the public. तो एट द मोमेंट क्रूड की प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में बिकॉज ऑफ द लेसर सप्लाईज बाय सऊदी, बाय OPEC and OPEC plus countries. Actually they want the prices to hike. Oh, okay. What happens is, यहाँ पे I would like to quote one more interesting thing that happened in the past. If I talk about 1970s, there's a concept called Dutch disease. ठीक है. इन हॉलैंड 1970s के अंदर एक डिस्कवरी हुई, गैस डिस्कवरी हुई. तो द गवर्नमेंट एंड पीपल थॉट दैट इट वाज ऑलरेडी अ डेवलप्ड, यूरोपियंस वर ऑलवेज अहेड ऑफ अस एंड अहेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. तो एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि बिकॉज ऑफ द डिस्कवरी इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए थी. Everyone was excited that now things will be in line and it will positively impact the economic growth. What turned out to be was the opposite. That's interesting. Because देखें, एक तरफ जब prices increase करती हैं, ठीक है, आप you have for example you have a discovery, ठीक है, and discovery के बाद prices ऊपर चली जाती हैं. प्राइसेस नहीं भी ऊपर जाती हैं तो आपके पास you have a new product to export. ठीक है, that product is being dealt in dollars. ठीक है, उसका ट्रेड होता है डॉलर में. मैं यहाँ से मेरी क्रूड की डिस्कवरी हुई, मैंने डॉलर में ट्रेड किया, मैंने एक्सपोर्ट कर दिया. व्हेन आई एक्सपोर्ट इट आई गेट बैक मोर डॉलर्स. जैसे डॉलर मेरी कंट्री के अंदर इंक्रीज़ किए तो मेरी करेंसी वैल्यू अप्रिशिएट कर गई. उस करेंसी वैल्यू अप्रिशिएट करने की वजह से मैं जितनी इंडस्ट्री मेरी उस ऑयल या गैस के अलावा जितनी इंडस्ट्री थी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वो इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ. नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों हुआ? मेरी चीज़ें जो मैं बना रहा था वो महंगी हो गई एज़ कम्पेयर टू व्हेन आई कंपेयर विद डॉलर्स, क्योंकि मेरी करेंसी वैल्यू अप्रिशिएट की. अब जो मैं एक्सपोर्ट करूँगा वो महंगा होगा रादर देन इम्पोर्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम अब्रॉड. तो दैट सिमिलर कॉन्सेप्ट हैपेंड इन हॉलैंड
their manufacturing industry declined in 1977 because of their discoveries, because the shift was towards the E&P. Of course, you were getting more money out of it. So easy remuneration जहाँ पे भी होगी तो everything will shift towards that. तो उसकी वजह से job loss भी होगा, जितनी भी industries बंद होंगी, फिर अगेन इससे नेगेटिव इम्पैक्ट होगा. लेकिन डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर जो बड़ा डिफरेंस होता है वो ये होता है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़ जो है ना वो ओवर द लॉन्ग रन दे आर रेजिलियंट टू द चेंज, दे कम बैक ऑन द सेम पोजीशन. लेकिन जब डेवलपिंग इकोनॉमी सेम सिचुएशन से गुजरती है तो उसके लिए चीज़ों को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है. तो जहाँ तक बात है ये प्राइसेस की, तो टिल द टाइम वी आर नॉट सेल्फ सफिशेंट, till the time we are importing these three products which I told you. Crude ka price, I told you it's $90 right now. It will increase and it's expected to touch $100 in the near future. Okay. So till that time you'll have to pay a high either the government has to bear it or either the people have to bear it. Government itself, of course, because of the funds and because of the difficult political situation and of course law and order situation and other things that are impacting the work of government, but still it's going to take time for government to bear things on its own. They have to pass it on the people. Right. तो जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी है ये भी प्रोड्यूस, there's a big chunk जो कि गैस से प्रोड्यूस होता है. गैस आप फिर इंपोर्ट करते हैं, आप RLNG आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है. आपकी इंडिजिनस जो है जो गैस यहाँ से आप प्रोड्यूस करते हैं जिसको इंडिजिनस कहते हैं, लोकली प्रोड्यूस गैस, दैट्स नॉट इनफ टू फुलफिल योर नीड्स. Okay, then let's try. And RLNG, sorry, again, RLNG is again 2 or 3, 4 times expensive than what you produce in Pakistan. Then let us know what would be, very lastly, how do we then build this resilience, against all these shocks that our economy faces, and also with regards to building a resilient, energy secure country? Like I would I would refer the same thing. The whole world is running after renewables. We should start running. It's the time That's that our we should tagline. catch the bus and we should do the same. अगर longer term sustain करना है आपको, तो you cannot sustain on imports and which are so expensive for you, for an economy like you cannot even bear the pricing pressure of those products. So if you want to sustain for a longer term, you have to shift towards renewables. You have to shift towards clean energy. It's going to improve your environmental. It's going to reduce your environmental cost. It's going to reduce your pocket cost, and it will of course bring into place new job opportunities for people. And this is how. And then when you'll shift to your industry, your manufacturing industry, export industry will fully work. Right now, at times, because of the shortfalls, you have to shut down your industries. You have to shut down either the gas for people or the gas for the industry sector. So, of course, this shift is a need of the time in order to bring about the change. And I believe it's going to take it's going to take a while, because recently the Prime Minister also gave a statement on this, that they plan to shift toward 40% of renewables. Their energy source to be 40% of renewables by 2030. So if that plan turns out to be a reality, I believe it's going to be a breakthrough for Pakistan. Well, I truly hope that by 2030 we're able to achieve at least a semblance of it, because from most importantly, political stability, and from there emerge all the opportunities for the people and the country. Thank you so much, Mr. Tabish, for giving us the time, and thank you so much for highlighting, some basic concepts and the issues that are so talked about, and I hope our audience also learned from you. So till then, see you again on another episode of Policy Beats.